वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, ऑजी एक्स से बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं? गालिब, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप मैं ठीक है? ठीक हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? दो तीन बातें आज करनी थी आपसे। तो पहली बात, लास्ट टाइम आई वाज लुकिंग एट योर live show, and there's a guy that came in, a woman guy, who started asking you, hey, what alternative do you have? Islam gives us a rule book to live and everything. You know what I'm talking about? हाँ हाँ, एग्जैक्टली Yeah. So, and if you take it away, what else? You guys only talk. You guys criticize Islam and this. What do you have? And then you replied him. If I was in your place, you know what I would have said? I would have said, बताएं बताएं। हाँ, I would have said, I will give you a better religion in 15 minutes. अच्छा बताएं फिर वो कौन सा रिलीजन है? Exactly, right? अगर आप और मैं बैठे एक दिन और किताब पे लिखे इंसान को जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, don't you think we can come up with a better religion? बिल्कुल बिल्कुल, अकेले भी बैठ जाएं तो बना सकते हैं उससे Exactly. अच्छा इस्लाम से। हाँ 10-15 ह्यूमनिज्म की 10-15 रूल्स बताने हैं तो बन गया religion. हाँ बस one thing we can do, we can't promise pussy in heaven. That's not what we can do. हाँ हाँ। That's what how you should reply these guys. आपने उसको थोड़ा लंबा खींचा. You know what I'm saying? अगर आप उसको मुंह पे बता देते, मैं 5 मिनट में बता के दूंगा बेटर रिलीजन, अगर मानना है, इसमें क्या बोलना है? इसमें बोलना हर इंसान बराबर है, चोरी मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, औरतों की इज्जत करो, बन गया रिलीजन, राइट? और इसमें ये भी एक क्लॉज डालना है, एज वी लर्न बेटर थिंग्स इन फ्यूचर वी कैन चेंज दीज थिंग्स, बन गया पूरा फ्लेक्सिबल रिलीजन। नहीं, मगर मेरा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो वो बताए ना कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं वो आपको बोलने की कोशिश कर रहा था ना कि आपके पास है क्या। तो इसीलिए तो दूसरी बात, तो अभी कल मैंने न्यूज़ पढ़ी बीबीसी पे, there was this interesting news about they have discovered a fossil of a 4-legged whale. I don't know if you saw that. ये मगर ऐसे ये फॉसिल पहले भी मिले हैं। हाँ अभी exactly. शायद दोबारा मिला हो कोई। This time they have found it in Egypt. So it's as you know, the whales, we know that the whales they have evolved from land mammals who slowly went to the sea. So there's a good beautiful transition of how they lost their legs and everything. So now they have discovered this fossil. So I found it an interesting news and posted on my WhatsApp group. फिर तो पता है आपको मोमेंट्स की रिएक्शन। अच्छा, क्या कह रहे थे मोमेंट फिर? मोमेंट में हो गए शुरू है क्या एवोल्यूशन, सारा बकवास, ये तो सारा God has created it, this and that, this is no proof. So then फिर फासिल क्यों निकल आते हैं फिर? हाँ so then कुछ क्रिश्चियन तो ये भी मानते हैं कि फासिल शैतान ने रखे हुए हैं जमीन में, तो मैंने उसको बोला हमें भटकाने के लिए। you guys, you're not being smart, you're going with the old narrative. Some modern Muslims are already realizing that evolution is true, and they are trying to find things in scripture which go with evolution. It's better for you to jump in that camp. जैसे गांधी बोलने की कोशिश कर रहा है आजकल, एवोल्यूशन तो कुरान में है, कोई वर्स उसने निकाली है। यासिर काजी कहता है कि एवोल्यूशन ठीक है, बस इंसान इवॉल्व नहीं हुआ, बाकी सब कुछ इवॉल्व हुआ। नहीं वो नहीं कहते। उनका लॉजिक पता है क्या है? वो क्या करने की कोशिश करते हैं? वो ये कहने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि गांधी कि एवोल्यूशन हो रहा था। मैं यासिर काजी की बात कर रहा हूँ, यासिर काजी। अच्छा। गांधी का मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मुझे लगता है ये अपोलॉजिस्ट इस व्यू पॉइंट पे आएंगे, बोलेंगे
एवोल्यूशन जी हो रहा था, लेकिन एक टाइम पे खुदा ने इसमें सोल झोंक दी और वो बन गया पहला आदम। दैट्स व्हाट दे आर गोना गो विथ, क्योंकि वही गामदी वही करता है। मैंने उसने कोई वर्स ढूंढी है तो उसको वो फिट कर लेता है, तो दैट्स व्हाट दे आर गोना से। एंड यू नो उसको आप क्या बोलोगे जब आप वो ऐसे बोलेंगे? हाँ जी, एवोल्यूशन हो रहा था, लेकिन एक टाइम पे जो इवॉल्व होके कोई बना था, खुदा ने बोला इसको मैं आदम बनाऊंगा, इसको उसने उसमें रूह झोंक दी। दैट्स व्हाट दे आर गोना अल्टीमेटली से। पहले वो बगैर रूह के फिर रहा था दुनिया में। हाँ। तब तक तो थे ना बगैर, जो नियंदरथल थे, जो बाकी थे लूसी पूसी, वो सब ऐसे ही थे। लेकिन जब गॉड को मौका आया, गॉड को ख्याल आया, तो दैट्स व्हाट वही इनकी बकवास करेंगी अल्टीमेटली, दैट्स व्हाट दे विल स्टिक टू। तो फिर मैंने इनको बोला कि देखो यार, there is such a beautiful transition. It's very clear that 4 billion years ago, only the simplest single cell organisms lived. Then you see slowly you move on in time, then you see slightly more complex. Then you see a slightly more complex beings. For some million years ago, you see, some leeches, this, that. So there's a beautiful transition from simple to complex. And then ultimately only maybe a million or maybe 500,000 or 300,000 years ago, you see highly evolved intelligent consciousness. So what was your God doing? उसको क्या पहले वो 2 बिलियन ईयर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना रहा था? नहीं, असल में अल्लाह मियाँ ने पहले सबसे बनाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसने बनाए पौधे, ठीक है, प्लांट्स। फिर जब उसने पौधे बना लिए, फिर उसने उनमें स्पेशल एक भंग का पौधा बनाया, ठीक है। फिर उसने भंग पी और वो सो गया, और तब से अब तक सो रहा है बस। तो वही मैं उनको बोल रहा हूँ कि 3.7 बिलियन ईयर्स तक खुदा ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना रहा था। तो ये तो all it points to is evolution. It simply points to evolution. If you see a transition from a very simple to very complex, and they have found a fossil which is not where it's not supposed to be. अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला उन्हें, ऐसा फॉसिल नहीं मिला कि उनको कोई प्री कैम्ब्रियन में उनको कोई वेल मिल जाए, इंसान मिल जाए, कैम्ब्रियन में उन्हें कोई इंसान मिल जाए, कोई उन्हें जुरासिक में कोई इंसान मिल जाए, ऐसे नहीं होता। रिचर्ड डॉकिंस की बुक में पढ़ा है मैंने, when they find mammals in Precambrian, then we will say evolution is wrong. But that's not happening. That's not going to happen because the natural selection, the random mutation and natural selection, that's a beautiful theory, and that explains all. That explains all. वैसे भी वो किसका है? मेरे ख्याल कार्ल सेगन ने कहा था कि nothing in biology makes sense without evolution. It doesn't. It is such a beautiful concept. कोई भी बात सेंस नहीं मेक करती। अगर आप एवोल्यूशन को हटा दें, बायोलॉजी सारी की सारी कोलैप्स हो जाएगी। आप कोई बात नहीं कर सकते। सारा फिट होता है। There is one thing we don't know. I have two doubts. Not doubts. I have two questions which are unanswered. Number one is, how did the first thing start? Because that's also, even to form one complicated DNA molecule, it's a very, 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 unlikely to happen by chance. So वो कैसे बना? I don't think we have a theory for that. इसके लिए थ्योरी तो है, हाइपोथेसिस तो है। एक तो माइकल मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने जमीन के ऊपर मिलने वाले रॉक्स को और का एक कॉकटेल बनाया, पानी डाला, उसको बिजली चिमकाई, तो उसके अंदर अमीनो एसिड्स पैदा हुए। उससे वो इनिशियल डीएनए मॉलिक्यूल का बनना प्रूव नहीं होता। एक तो वो है। मगर ये है ना कि जो पहली लाइफ स्टार्ट हुई होगी वो बहुत सिंपल होगी, और मसला ये है कि पहली लाइफ जब भी स्टार्ट हुई होगी वो फॉसिलाइज नहीं हुई। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि पहली लाइफ शायद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बहुत ही सिंपल। नहीं, शायद वो जिन्हें आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो इतना छोटा होगा, वो फॉसिलाइज नहीं होगा। What I'm trying to say, even to form one basic replicating molecule, it's a very complicated molecule. हाँ, मगर आपको ये तो पता है ना कि जमीन के ऊपर समंदर कितना बड़ा था, और समंदर की
समंदर की सरफेस पे बिलियन ट्रिलियन गजिलियन अपॉर्चुनिटीज हैं वैसा बनने के लिए, और मल्टीप्लाइड इनटू बिलियंस ऑफ ईयर्स। पहले 2 बिलियन ईयर्स तक तो जमीन के ऊपर कोई ऐसी लाइफ नहीं थी, ठीक है, जो कि फॉसिलाइज होती। इवन के प्री कैम्ब्रियन में जानदार थे, देयर वर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मगर वो सारे सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म थे जो कि फॉसिलाइज नहीं होते, वो फॉसिलाइज नहीं होते। लाइफ जो है कहते हैं कि शायद जमीन के ऊपर 3 बिलियन ईयर्स पहले आ चुकी थी, मगर वो फॉसिलाइज नहीं हो रही थी, बस ये सिंपल बात है। दूसरी, आपने पैनस्पर्मिया के बारे में सुना है? You will have to explain that. अच्छा, अब पैनस्पर्मिया की जो थ्योरी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और डेफिनेटली अब हमारे पास एक ऐसा भी रॉक जमीन के ऊपर मिला है जो कि बेसिकली मार्स का रॉक है। ऐसा रॉक जमीन के ऊपर मिला है जो कि बेसिकली मार्स का रॉक है। कैसे कि कोई मार्स के ऊपर कोई एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ, तो जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी उछलता है, ठीक है। जब मार्स के ऊपर एस्टेरॉयड स्ट्राइक हुआ है तो क्या हुआ कि मार्स के पत्थर स्पेस में पहुंच गए, और वो फिर घूमते रहे सूरज के गिर्द या मार्स के गिर्द, और कोई वक्त ऐसा आया कि उनमें से एक पत्थर आके हमारी जमीन पे गिर गया। Okay, got you. So even now, सुने अभी बात पूरी नहीं हुई है, ये थोड़ी लंबी है, 5-1 मिनट मुझे लगेंगे एक्सप्लेन करने में। sorry, go ahead. तो क्या है कि किसी भी लाइफ जो प्लेनेट रखता है उसके ऊपर जब भी कोई एस्टेरॉयड इंपैक्ट होता है तो कुछ रॉक्स उसकी मिट्टी से निकल के स्पेस में चले जाते हैं, और कई ऐसे हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कहा जाता है, जिसमें टार्डिग्रेड और बहुत सारे और आते हैं। टार्डिग्रेड तो इवन कि आप उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या भी नहीं सकते, उसे माइक्रो एनिमल कहा जाता है, और वो हर जगह पानी कहीं भी खड़ा है उसमें टार्डिग्रेड फिर रहे हैं। तो टार्डिग्रेड ऐसा है कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे भी वो जिंदा है और सबसे गर्म जगह पे भी जिंदा है, इवन के वोल्केनिक वेंट्स के अंदर भी टार्डिग्रेड जिंदा है, और उसको स्पेस में ले जाके स्पेस की रेडिएशन के साथ भी एक्सपोज कर दें वो वहां भी जिंदा है। तो अब होता क्या है कि अगर फर्ज करें जमीन के ऊपर कोई एस्टेरॉयड स्ट्राइक होगा, जैसा कि कई बार हो चुके हैं, और खास तौर पे जो युकाटन पेनिनसुला वाला जो जुरासिक में जो हुआ था, उस वक्त बहुत से जो रॉक्स हैं वो स्पेस में चले गए। अब वो रॉक स्पेस में जाके क्या बन जाते हैं, एस्टेरॉयड, और वो अब सूरज के गिर्द घूमने लगते हैं। अब हमारा सूरज जो है गैलेक्सी के गिर्द घूमने में उसे 25 मिलियन ईयर्स लगते हैं अपना एक सर्कल गैलेक्सी के सेंटर से गिर्द कंप्लीट करने में। उसके दौरान वो कई गैस क्लाउड से गुजरता है, इवन के इस वक्त भी हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े गैस क्लाउड से गुजर रहा है, ठीक है, वो कई जगहों से गुजरता है। और स्टार्स जब एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं या आप ऐसी जगहों से गुजरते हैं तो आपके जो मीटराइट्स होते हैं वो एक सोलर सिस्टम से दूसरे में चले जाते हैं एस्टेरॉयड, जैसा कि अभी मुआ एक आया था जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। तो जमीन से या किसी और प्लेनेट से एक रॉक ऐसा आया जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ थी, और वो हमारी जमीन तक आ गया, और जमीन पे आके जैसे गिरा उसने अपनी लाइफ इधर डिपॉजिट कर दी। अब वो लाइफ को अगर यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो यहाँ पे इवॉल्व होने Exactly. तो जरूरी नहीं है कि लाइफ को हर बार जीरो से स्टार्ट करना पड़े। एक जगह पे 1 बिलियन ईयर्स इज इवन कोई मसला नहीं है कि आप बिलियन ईयर्स चाहिए हमारे सोलर सिस्टम से किसी एक एस्टेरॉयड को किसी और सोलर सिस्टम में जाने के लिए, वो वहां पे जाके लाइफ का सीड प्लांट कर देगा। जब लाइफ का सीड वहां पे प्लांट होगा तो लाइफ वहां पे इवॉल्व होने लग जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी, मगर ये हाइपोथेसिस है, वी डोंट नो। हो सकता है जमीन पे लाइफ आई इस तरह हो, हमें नहीं पता कोई। So basically that increases the odds. So that increases the odds by maybe a billion times. Even we're not restricted to think how life started on Earth. It could have started anywhere in the universe and then brought to Earth. Yeah. ठीक है, चलें और को बात आप करेंगे। तो और ये भी देखो ना कि you have a plant, you have a mammal, you have a crustacean, you have a leech, you have a lizard. Everybody has DNA as the genetic material. What does that tell you? उससे यही पता लगता है कि हमारी जितनी भी लाइफ है वो किसी कॉमन एंसेस्टर से आई है। Exactly. खुदा तो God was not restricted by that. He could have put a silicon chip in one, DNA in one,
some other carbon molecule and some other. The fact that we are restricted to this DNA molecule and its replication all over the life from start to end, it also tells us it's a very, 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 very unlikely, improbable process which somehow happened and it's propagating. Right? वही तो कंक्लूजन बनेगा ना? यही बिल्कुल कंक्लूजन हाँ, बनेगा। तो चलें, दूसरी बात, ठीक है, मैं हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, दूसरी बात थी, टाइम है थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी, करें बात। तो ये इस्लाम पे मैं ये जो इस्लाम के है 1024 लाख प्रॉफिट, 1,24,00,000 आपने 1,024,00,000 कर दिया। 1,24,000 the profits that they talk about, and God fails to mention more than a dozen in Quran, और वो भी वही जो वही मिडल ईस्ट में ऊपर से नीचे कर रहे थे, है ना? ऐसा ही है। तो अगर 1,24,000 पैगंबर है, तो मुझे बोलो ना, उनमें से who is the likely among them, those 1,024 who was in Australia, who was in China, or who was in India, or who was in North America or South America? I mean, at least tell me one. You know, I'm not asking you to tell me about all 1,24,000. Give me one possible God's prophet in all those continents among those 124,000. Is there any? कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का किसी प्रॉफिट का नाम मैं चैलेंज करता हूँ, को मुसलमान बता दे। चले ये बोले अमेरिका का किसी का बता देना, कोई नहीं, कोई भी। क्योंकि the condition is one. If they say this guy would have been the prophet of God, that has to satisfy some requirements. Like that prophet has to say God is one. That prophet has to say there is Jannat Jahannam. Some basic things have to meet, right? कौन सा है ऐसा है? कौन सा है? कोई भी नहीं बोलते हैं कि कोई नहीं है। नहीं, नॉर्वे में नहीं कोई भेजा। ये तो भी कहेंगे थोर हमारा प्रॉफिट था, ये तो ये कहना शुरू कर देंगे। और तो बाद में लोगों ने थोर की फिलॉसफी तो बिल्कुल अलग थी इस्लाम से। वो कैसे इस्लाम का प्रॉफिट हो गया? नहीं, उनकी फिलॉसफी बड़ी अच्छी है। वो भी जन्नत में लड़कियों से सेक्स करेंगे। हाँ, वो भी कहते हैं फिर मत होगा, फिर होगा। लगता है वो था वाकई थोर। और वैसे तो चंगेज खान, मुझे लगता है कि असल में तो असली नबी तो चंगेज खान था। लेकिन बारबेरियनिज्म पे देखा जाए तो चंगेज खान का बारबेरियनिज्म, Islam came in the 7th century, but the human beings didn't discover. There were human beings living in Americas at that time, and nobody from Arab would have had any connection with them till the 15th century. So between 7th century to 15th century, कौन था वहाँ खुदा का पैगंबर? For example, तो सारी एक आर्कियोलॉजिकल सारी हिस्ट्री सब मिट गई हर जगह से। और कभी बोलते हैं जी ये वेदास में हिंदूज के खुदा भी प्रॉफिट भी हो सकते, वो कहाँ हो सकते? वो तो बिलीव करते थे रीइंकारनेशन में। तो खुदा को क्या मूड बदल गया, पहले रीइंकारनेशन फिर जन्नत जहन्नम? ये क्या बोलते हैं? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो 1,24,000 की बोंगी है, यू नो, ये इन पे एक इट्स इन पे एक तोहमत है, इन पे एक, क्योंकि ये नहीं बोल सकते 10-15 से ज्यादा। खुदा नहीं, नहीं, नाम ही नहीं है किसी और का, नाम ही नहीं है किसी और का। ना कुरान से भी साबित नहीं है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे। पता नहीं कहाँ थे 1,24,000। या तो वो ऐसे फजूल प्रॉफिट थे, उनको कोई बात ही नहीं मानता था, वो उनका नाम निशान ही मिट जाता था। मे बी 5-6 फॉलोअर होते थे और मर जाते थे, या तो वो उसकी ये देनी है आर्गुमेंट। अब हजरत नूह ने 800 साल तक तबलीग की और लोग कोई भी नहीं माने, मुसलमान कोई हुआ ही नहीं। हाँ, और वो था ना वो भी कितने, वो कुछ 90 फीट का था कि कुछ है ना, वो 130 फुट का आदम था जी। वो तो रिवर्स एवोल्यूशन हो गया। चले ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूँ फिर आगे। सही है, फिर करेंगे बात। Hold on just a second. अच्छा just a second. हाँ जी। So my what I told my friends, you know, मेरा एक group है, I have these 50 moments and I am the only one who is kafir. And so they are bombarding me with this nonsense all the time. So I told them, hey, you guys give me one, just one, not 2, not 3, not 4,
give me just one unequivocal statement in Quran that would not have been possible for an average intelligence seventh century man to make. Just one. If कोई you भी give me one like that, I will convert to Islam right then. कोई भी एक भी कोई नहीं. खुदा को ये God could have said, okay, guys, the sun and moon look the same size, but moon is actually smaller than the sun. ये थोड़ी सी बात लिखने में खुदा को क्या कत्ल हो जाता? हाँ तो वही मैं कह रहा था ना, खुदा ये बता देता ना सिर्फ पानी उबाल के पिया करो। नहीं सारे मसले ठीक हो जाते। पानी उबालना छोड़ो, इससे तो पता चलता ना ये किसी ये होती कोई कॉस्मोलॉजिकल बात जो इंसान को नहीं पता है कि मून और सन एक साइज के नहीं है, मून सन से 400 गुना छोटा है। यही एक बात बोलनी थी, हम सब मुसलमान बन जाते। हाँ, मगर वो नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, यही बोंगिया इधर उधर की। चलें ठीक है, थैंक यू आपके आने का, मैं अब आगे चलता हूँ। और यू टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू, ओके बाय। अच्छा जी, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।